Hi everyone, Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. And this is Friday at 4. I'm sure you might be waiting for the week to start the Friday at 4 जिससे हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, देखेंगे कहां पर जा रहा है निफ्टी, क्या लग रहा है, what is the overall wave pattern suggesting, what is Gann Square of 9 suggesting. We are going to look at all of these things and we are going to do that in a style with a very simple way. That's what we are going to do. And बहुत ही quickly, I am just going to check if everyone is able to join in and we are able to be. Is the webinar live on YouTube? Also, can my team confirm it because there is some challenge. I am not able to see that being live on YouTube. I'm just checking if it is live on YouTube and if you are, it's live. So can you share the link across with me very, very quickly? It's fantastic to have you all here. Jayesh, Naresh, गौरव, हेमंत, क्या बात है, बहुत सारे मेंटीज है आज, रवि, दीपक, ऑलवेज वार्म वेलकम, भवानी राम, ग्रेट टू ऑलवेज सी यू हियर. तो दोस्तों, क्या लग रहा है बाजार में अभी, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लगता है आपको it's going to go up or it's going to go down? That's the question. I'm going to take a very quick poll without spending much time. What do you think is going to happen from here on? And it's always pleasure to be here in Friday at 4 क्योंकि मजा आता है आप लोगों से बात करके, डिस्कशन करके और मार्केट के बारे में समझ के. तो चलते हैं आगे दोस्तों. मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं बहुत ही क्विकली just to see what is the Nifty trend in the coming week that you think is going to happen by coming Friday. तो फ्राइडे के क्लोजिंग तक क्या लग रहा है यार बाजार का ट्रेंड आपको? और people who are there on YouTube, if you want to join me on the platform here on Zoom, you can simply join me on the Zoom platform. यहाँ पर मैं बहुत ही क्विकली शेयर कर देता हूँ मेरा लिंक एंड आप जुड़ सकते हैं Zoom पे. आई एम एबल टू सी योर चैट ऑल्सो नाउ ऑन YouTube. इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर. ये पोल मैंने लॉन्च किया है दोस्तों. पोल में डालना यहाँ पर इट शुड गो डाउन बिकॉज आपने पुट खरीद रखा है. आपने पुट लिया है इसलिए मार्केट नीचे नहीं जाएगा. आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा इसलिए आपने पुट लिया है. ओके, that's how it has to be looked at very, very quickly. So here is the link which I have shared across if you want to be with me on the Zoom platform, and I'm just sharing it across with you all. I'm awesome. That's what Devi Singh, sir, you are awesome. Thank you very much. ये पोल को मैं एंड कर रहा हूँ दोस्तों. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल है. 71%, I'm sharing across the results of the poll. 71% of the participants are thinking that the market is going to go on the upside and 29% are thinking it's going to go on the downside. But Gann Square of 9 level कौन सा है आपको पता है? 22,276 and it is working exceptionally well. Shilpi Jain is here. Yesterday you took a call option and made a huge money. क्या बात है, आपको वही कहा. यू आर सेइंग दैट द व्यूज आर चेंजिंग अगेन एंड अगेन. बट देखिए ना, जब मार्केट में क्लैरिटी नहीं है तो छोटा लॉस करना है. जब क्लैरिटी मार्केट में मिलता है तो इट बिकम्स अ किलिंग. यू हैव टू मेक अ किलिंग एंड इट इज वर्किंग सो एक्सेप्शनल. सो मेनी ऑफ द पीपल वर लुकिंग एट द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न. तो निफ्टी के बारे में अगर हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा था जो सब लोग फॉलो कर रहे थे कि बहुत बड़ा बेरिश एंगल्फिंग में 2 दिन पहले. बट लुक व्हाट हैपेंड yesterday. Nifty did not pay any attention to bearish engulfing pattern. Can someone tell me why? कोई कह सकता है कि क्यों bearish engulfing pattern का कोई implication नहीं था? क्यों ऐसा हुआ? Because the 3 candlestick rule did not change. Fantastic, Praful, Darshan, Dr. Sausan is great to see you also here. कि भले ही मार्केट में फॉल आया हो, बेरिश एंगल्फिंग मना है, एग्रीड, लेकिन उसका कंफर्मेशन थर्ड कैंडल से मिलता है. थर्ड कैंडल की क्लोज प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई. दूसरा कारण है short term time cycle was supposed to go up and it went up like a style. So Sudhir is saying your time cycle analysis is fantabulous. It is, because if you look at the time, Nifty reversed precisely as expected from the time that we were thinking, and we got a rally of more than 300 points on Nifty index itself. Now that's the power of time. If you apply it correctly, it works like magic.
If you apply it incorrectly, it can take away your money. That's how time cycle works. And it's very important to look at these aspects in a very systematic way. So let me go on the chart of Nifty. I'm also, how many of you want to talk, want me to talk about the Neo Wave, uh, current Neo Wave perspective? What is the overall chart looking like? What is the overall wave count looking like? And from the medium to short term perspective, कैसे देखना है market को from Neo Wave? So there are a lot of people who are asking for the Neo Wave analysis. So let me do one thing. Let me open up my trading view screen very quickly and share it across with the wave perspective. यार 22118 का लेवल था, लेकिन मार्केट वो लेवल को ब्रीच करके ऊपर की ओर चला गया. सो पहले तो एक काम करते, पहले हम शुरू करते गैन स्क्वायर ऑफ 9 के साथ में. देखते हैं कि गैन लेवल के इधर आसपास कहां पर है निफ्टी. और मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे लेके जाता हूँ निफ्टी के बहुत ही क्विकली. यहाँ पर है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का चार्ट. आप देख पा रहे हैं मुझे, मतलब मेरी स्क्रीन को, एवरी वन ऑफ यू? ओके, ऑसम. दिस इज गैन स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट एंड यू कैन क्लियरली सी हियर कि ओवरऑल जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली अभी हम जो आज का हाई बना वो 22,276 पे बना. And I've been talking about this level. Once this candle turned bullish above that 21,918 back here, and I've been mentioning that we will reach towards 22,276. Can you see that? And are you able to see that, every one of you? Okay, so this is Gann square of 9 chart that I am showing it across. And many people are asking about what is the next level on the Gann. किसे पता है क्या? Anyone is aware about the next Gann level on the upside, which is the Gann square of 9 level above this? I'll talk about the wave theory also. कौन सा लेवल है? ओके, देयर इज एन आंसर हियर. 22,350 नहीं है, 22,827. यार इतने अलग अलग आंसर्स आएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. यहाँ पर सबसे इजी और करेक्ट वे से देख रहा है, थोड़े ही जन है. It is 22,877. Fantastic, Gopal. And there are few people, Jayesh. Absolutely. 22,877 is the next Gann square of 9 level. तो यहाँ पर मैं एक लेवल आप लोगों के लिए लगा देता हूँ जिसे कहेंगे 22,877. ये है हमारा दूसरा लेवल, जहां पर अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करके हायर हाई हायर लो बनाएगा तो इस लेवल्स पे हम जा सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कैन क्लियरली सी हियर. एवरीवन, आर यू एबल टू सी दैट? नाउ दिस Gann square of 9 levels. So निफ्टी Gann square of 9 होता क्या है, इसके बारे में तो मैं आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी डिटेल फैशन टुमारो एंड डे आफ्टर इन काल चक्र सेशन. So इस लेवल पे नाउ निफ्टी इज एट Gann square of 9 level of 22,276. If this level, if broken, if this level gets broken, जो कि डिसिसिव ब्रेक होना चाहिए with higher high and higher low formation above 22,276, this will open next Gann square 9 levels. So are you with me? And इस तरीके से आपको यहां पर देखना है. नाउ ये लेवल्स बहुत ही शानदार वर्क करता है, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग दिस, you can't apply it in isolation. ठीक है, I apply this concept of Gann square of 9 along with my various concept of time cycle. I use either time cycle, या तो टाइम साइकिल के साथ अप्लाई करना है, या वेव थियरी के साथ अप्लाई करना है, या इस लेवल को अगर हम अप्लाई करें तो सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करके हमें इसे अप्लाई करना है. Only if we are able to apply these concepts along with all of these techniques, then we can come out with a complete detailed way of looking at the charts. ठीक है,
सो ये था गैन का लेवल। इसके ऊपर क्या चाहिए मुझे टू स्टार्ट द पॉजिटिव ट्रेंड? आई अगेन रिपीट, व्हाट डू आई नीड अबाउट दिस लेवल फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव ट्रेंड? I need a very clear cut understanding for a high and a higher low here, and then we can say the next level will open up. So इसके ऊपर अगर हायर लो बना तब हम बोल सकते हैं यार नेक्स्ट लेवल पे अभी निफ्टी जाएगा, जो कि 22,877 के पास में है। आर यू विथ मी एवरी वन ऑफ यू? इज इट क्लियर? चले अभी हम देखने के लिए कहां पर है हमारा नियो वेव का काउंट। व्हाट इज द नियो वेव काउंट सजेस्टिंग, हाउ इट इज लुकिंग लाइक, एंड व्हाट इज द ओवरऑल वेव पैटर्न ऑफ let me just share across very quickly the overall wave count. I'm going to share that across the wave count, and we will look at this in a very detailed fashion. Overall, if we are looking at this chart, okay, what I have done is I've marked this chart as equality as a box. Can you see the box, every one of you? And I'm going to keep this as a arithmetic scale. So if you are able to see this box, this is a neo wave box. I'm just checking if the size of the box is correct. And we can see that the overall box size that you are seeing here is same as the one which is on the left hand side, which is wave C. So this entire movement that you see here is a diametric pattern is still valid. What has happened is we have achieved the equality in terms of price. Price equality आ चुका है. In this wave E going on, the price equality we can clearly see is achieved at this point of time. यहाँ पर जो wave E equal to C हो चुका है. What is pending is we have not yet seen the time equality, which is there. So the time equality happens to be around April. Now, it's a very tricky scenario कि यार price equality हो चुका है, time equality नहीं हुआ है, तो diametric pattern है, guidelines है, rules as such नहीं है. The rules are only that we should be able to see some kind of a price equality also. And is there a Gann level of calculation using a formula? Yes, there is a formula through which these Gann levels can be calculated. मैं फिलहाल के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत डिटेल में हम कल परसों में करेंगे. काल चक्र का सेशन है 12 घंटों का, उसमें हम स्टॉक्स पे, एसबीआई पे, निफ्टी पे, इंफोसिस पे, सब पे गैन लेवल्स भी निकालेंगे और टाइम साइकिल भी अप्लाई करेंगे. वी आर गोइंग टू डू दैट. सो यहाँ पर फिलहाल के लिए E इक्वल टू C तो अभी भी है, और मोमेंटम फिलहाल कम है, वो पक्की बात है. द रीजन बीइंग वी आर इन द फेज ऑफ साइकिल. सो आइडियल के सिनेरियो में यहां से 5 मार्च तक हमें डिप मिलनी चाहिए, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर. देयर इज नॉट अ सिंगल प्राइस एक्शन दैट इज कंफर्म्ड अ रिवर्सल टू हैपन, which is a simple formula of close below the prior low, high below prior high, and low below prior low. So short term ka trend is still on the upside, even if the concept of wave theory is suggesting we are matured. So we are in a matured stage. Momentum can be less because time is not supporting, but we are still buy on dips. Now ये कंफ्यूजन ये क्लैरिटी है. क्लैरिटी का कैसे है? इससे क्लैरिटी इस तरीके से मिल रही है कि हमें पता है बहुत ही क्लियरली कि इफ द मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, I will be looking for short-term trading opportunity for 1-2 days, or I will sell option to ride the trend for 4-5 days. If and the momentum is less, that's the reason. If the momentum I am expecting is very strong, then I can positionally buy now for 10-15 days. But I'm not going to do that as of now. I will do that only after I have a confirmation कि यार ये ट्रेंड अभी रिवर्स हो रहा है by the way of 2-stage faster retracement. To do that, I have to go on a 15 minutes or 1 hour chart. So if I go on 1 hour chart, I'm going to show you the internal count of 1 hour time frame. तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, ये था हमारा
क्लियरली वेव थियरी के हिसाब से वेव काउंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट वी सॉ हियर इज दैट निफ्टी as per neo wave is still ongoing in the form of wave E, which is not yet complete since prices moved back above 22,118. Okay, clearly. So if this is extending, okay, so wave E we can clearly say is extending. So what is the target? That's the question everyone is asking. So what is the target since wave E is extending? Now to derive the target, we need to come on a short-term time frame chart to see the internal count so that we can time the market extremely clearly. Are you with me? So वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आके देखना पड़ेगा कि कहां पर यहां से मूव आ सकता है. यहां से मूव आने के लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पैटर्न बन रहा है 1 आवर चार्ट पे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी क्लियरली. यहां से मैं जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे. On this chart what I am going to see is I have already marked it for you all so it becomes easier. This was the entire rise that we saw. Okay, this was the entire rise. There was completion of wave X here. Post that we can see again a move on the upside. Okay, and then again wave X which got completed here. After the completion we are again seeing the upward journey in the form of a third correction higher. We completed wave A at the highs. This was an outside bearish engulfing pattern. Wave B, this is where price was supposed to form a low in the form of starting of wave C. So we are now at wave C on the upside. The target, if you are checking my tweet, the target is on the upside. Anyone remembers? Everyone following my Twitter handle? यहाँ पर टारगेट कौन सा होगा? Okay, 22,420. Now the question is ये 22,420 अचानक से आया कैसे? Do you want to know the answer? See, जो भी मैं levels देता हूँ, there is a reasoning behind which I am giving you these levels, and the reason of 22,420 is how. Let me show it across to you on the chart over here. And if you are looking at the overall projection, which is यहाँ पर जाके मैंने trend based fib extension लिया. I'm comparing this move on the upside and projecting it from this level. ठीक है, ये लेवल से मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया. अगर ये लेवल प्रोजेक्ट कर दिया तो मेरा पहला टारगेट है 22,313. वो आ चुका है, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डन है. नेक्स्ट लेवल है 76.4% जो कि चैनल का रेजिस्टेंस भी है. So my next level on the chart over here is 22,420. Can you see that? कौन सा लेवल है मेरा? 22,420 is this level, and that's why I have tweeted about that Nifty can move from the form of in the form of now wave C, which is going to be around 22,420. That's my target. This will remain valid unless and until I see breach below the 0B trend line. So this becomes my 0B trend line. Are you with me? क्यों आया यहाँ पर C? This is a 0B trend line. जब तक ये line intact है, we will see that level. This was a bear trap. कौन सा वाला bear trap था? ये जो था, this was a trap, which we call as a bear trap. बहुत जन अगर आप देखोगे वो बेरिश एंगल्फिंग देख के ट्रेंड रिवर्स हो गया, नीचे जा रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें शुरू हो गई. आई मेंशन्ड वन थिंग वेरी क्लियरली. अनलेस एंड अनटिल आई सी अ हाई बिलो प्रायर हाई, low below prior low and close below prior low, the trend does not change. Is it clear? Am I making sense to you? मुझे पूछना है आप लोगों से. Let us make it very interactive.
How many of you are using this concept of three candlestick rule? Let me ask, how many of you are using this concept of three candlestick rule? Okay, I can see so many of you are using these concepts. क्या बात है, क्या बात है। तो आप देख सकते हो कि इतना सिंपल सा रूल से कितना बड़ा डिफरेंस है। एकदम बेसिक रूल है, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस वो बेसिक रूल से पता चला। नाउ यहाँ पर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, दैट अपॉर्चुनिटी was around this level. This was the level. So let me just remove this. Now, what was the level where we had a buying opportunity? The opportunity for buy was around this is the channel. If we connect this channel, this is the level where we got a faster retracement in the form of upside. Now, this was wave 1, 2, this was third, fourth of a terminal impulse pattern, and this was wave 5th. So this completed a terminal impulse pattern, and post its completion, we got a move on the upside that confirmed the reversal of the trend because the 2-4 trend line was breached, and then the further confirmation about the entire C wave got retraced in half or 1/4 of the time. That is the post pattern implication, and this is the level where I turned bullish, and I mentioned also about the time cycle. So the bullish trend happened from the time exactly when it is supposed to, this entire move. This happened from the time when it is supposed to, this entire move. So the concept of time, if you club with wave theory, your understanding about market is at a different level. Do you agree with me? The way you can now club time with the concept of neo wave. So overall, जो perspective है, as I said, view on the market, if you look at it, the weekly trend is positive. The daily trend did not change the trend. So if I go on the daily time frame chart again and explain and show it to you, let me hide across all the indicators over here. If I hide everything and let me just delete everything here. And if I look at the zoomed in chart, the overall trend on the upside started from the formation of this candle, which you call as a doji, but this did not close. Now, my price action area, very important price action area, is going to be here. If Nifty closes below this price action area, then यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वो पता चलेगा. Because this is where we formed a high. This is where we formed the high. And so this level is simple. कौन सा लेवल होगा वो? 22,118, जहां पर हम बार बार अटक रहे थे, वो लेवल को ब्रीच किया है. तो मेरा सपोर्ट 22,120 के आसपास है. 120 के आसपास सपोर्ट है. दैट्स द लेवल विच आई ट्वीटेड. So are you now understanding how we are looking at the entire concept? Okay, because 22,120 is the level. So wave X ka marking is on the basis of irregular flat pattern, which is wave A, wave B, and this is C. So it's not wrong. Kumar, it is not wrong. This is X wave. I'm not sure if you understand the degree. This was wave A, this was wave B, and this is C. C is a terminal impulse pattern which formed 5 waves. So that's how the marking is done. Is it clear? And then we started again on the upside in the form of wave A, which completed here. This is B, and we are in wave C, which is currently going on. If wave C reverses down, then we can say below 22,120, यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर. शायद ये ongoing pattern है जो डायमेट्रिक का फॉर्म नहीं ले रहा है, बल्कि ये ट्राइंगल का फॉर्म ले रहा है. सो 22,120 के नीचे हमें पता चलेगा कि दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल पैटर्न. आर यू विथ मी? एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल? कैन यू टेल मी व्हाई दिस कैन नॉट बी अ zigzag? लेट अस सी कितने लोगों ने मास्टर ऑफ वेव्स अटेंड किया, या ब्रह्मास्त्र अगर पार्ट है उनसे पूछता हूं मैं कि क्यों ये वाला जो रैली है
the one that we are talking about right now in the form of ABC, that pattern ABC ये जो है can be only a diametric or a triangle pattern. It cannot be any other pattern. Can you tell me why? Time cycle is magical. Vishal Soni is saying thank you for that. Glad to know. I'm asking you a simple question. Why you think? Fantastic, Poonam. C is not higher than A. नहीं, C ने तो high A को निकाल दिया. B has taken lesser time than A. Fantastic, Ramesh Kumar. Awesome. Because Shri, great to see you also here. Vivek, B has taken lesser time than Vivek. So the only possible scenario that remains valid in this kind of an instance are the two patterns, which is diametric or a triangle pattern. And that's why my conservative target for this pattern is 22,313, which is achieved. The next conservative target is 22,420. So right now, I'm not forecasting the market for next 10 days because it's not in sync with the longer term cycle. I'm forecasting the market for next 2 days and trading basis of by selling puts so that I don't want to get into the SL की अगर जैसे ही ऊपर आया फिर आज पूरा दिन टाइम पास किया, my call option would have deteriorated. And in a day today, not a single candle has closed above prior candle high. Entire day today, धीरे and put values be deteriorate. That's how you can trade the market. Now tomorrow, this looks like a flag pattern. Are you with me? Can you see the flag pattern here formation? This looks like a flag type of a pattern formation. So if we manage to close below the prior candle low, then my trend will change on the downside. Is it clear, every one of you? Am I making sense to you all? कि क्या टारगेट है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 22,118 नियर का लेवल जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट है, टारगेट 22,420 है. आई एम नॉट प्लेइंग फॉर अ मीडियम टर्म ट्रेंड नाउ, आई एम प्लेइंग फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड until 5th of March because that's where the cycle lies, and that's how I'm going to play across this market by selling puts, buying call not on breakout but on dips because breakout will fail, momentum will be less because time is not in sync. Is it clear? ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है कि नहीं? कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लब किया, कैसे चैनल को लगाया, कैसे फीबो को लगाया और साथ में हमने मार्केट का व्यू डिराइव किया. तो ये था दोस्तों आज के लिए फ्राइडे एट 4 पे. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्टॉक एज ऑफ नाउ. वो हम अलग से ब्रह्मास्त्र के टेलीग्राम में डिस्कस करेंगे. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से. अभी आप लोगों ने मेरे ऐप के ऊपर कम्युनिटी का यूज करना शुरू किया क्या? वहां पर आप खुद भी चार्ट पोस्ट कर पाओगे, खुद भी आप खुद से क्वेश्चन पूछ पाओगे, वो सारी चीजें आप कर सकते हो मेरे ऐप के ऊपर. ऐप की लिंक शेयर कर दीजिए प्रोड्यूसर साहब सब लोगों के साथ में, बिकॉज दे कैन डाउनलोड द ऐप एंड वंस यू डाउनलोड द ऐप यू विल बी एबल टू पोस्ट योर चार्ट्स देयर इटसेल्फ. तो एक मैं डेडिकेटेड कम्युनिटी ग्रुप बना रहा हूं जो ये वेव थियरी प्रैक्टिस करते हैं, पीपल हु आर टाइम ट्रेडर्स, पीपल हु आर ग्रैंड प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप में बना रहा हूं कम्युनिटी पे, जहां ऐप के जरिए से क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो एंड ये सारी चीजें कर सकते हो. तो ऐप का लिंक शेयर कर दीजिए सबके साथ में. आपने शेयर कर दिया, यहाँ पर जाके आप डाउनलोड करिए. प्ले स्टोर के लिए लिंक है और iOS के लिए माई कम्युनिटीज का ऐप है, वहां पर आप कर सकते हैं. वेब लिंक भी शेयर कर दीजिए बिकॉज iOS वाले कम्युनिटी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनको वेब लिंक के थ्रू डाउनलोड करके कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो यू हैव टू गिव देम द वेब लिंक ऑल्सो इन केस दे वांट टू ज्वाइन द कम्युनिटी वेयर वी विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स. अभी दोस्तों आगे फाइनल चीज जो मैं बता रहा हूँ वो कल के लिए. How many of you are a part of the काल चक्र इवेंट? वेब लिंक शेयर कर दीजिए, ऐप की वेब लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए. सो हाउ मेनी ऑफ यू, लेट मी टेक अ वेरी क्विक पोल ऑल्सो, जिससे पता रहे कि यहाँ पर कितने लोग जुड़ना चाहते हैं काल चक्र के लिए. और जो लोग जुड़ चुके हैं वो क्वेश्चन वो आंसर दे सकते हैं चैट के ऊपर कि कितने लोगों ने काल चक्र जुड़ गए. एंड पीपल ऑन यूट्यूब, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर इट अक्रॉस. कमेंट्स तो बिल्कुल भूलना नहीं डालना.
आप लोग, क्योंकि अगर आप कमेंट्स डालोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और ये चीज सीख पा रहे हो। तो आपके कमेंट्स यूट्यूब पे डालना ना भूले। वेब लिंक हमारे जूम ऑडियंस पे भी शेयर कर दीजिए। आपने वेब ऐप लिंक शेयर कर दी है क्या? ओके, ठीक है। सो बहुत सारे जन हैं जो जुड़ चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल, और जुड़ना चाहते हैं। तो काल चक्र कल शुरू होने वाला है दोस्तों हमारा। इस काल चक्र का जो इवेंट है, मैं पोल भी ले रहा हूँ बहुत क्विकली, विच पार्ट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। People who have not yet registered can participate in the poll. We are going to now I want to prepare you for tomorrow and day after. We are going to be ensuring that you are all alert for 2 days. We will start in the morning sharp at 10 a.m. and यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे टाइम के ऊपर। कैसे आपके खुद के स्टॉक के लिए, इंडिविजुअल स्टॉक के लिए टाइम साइकिल को अप्लाई करना है, किस तरीके से वो अप्लाई होता है। वी आर गोइंग टू लुक एट 5 मंत्रस इन काल चक्र ऑल्सो। व्हाट आर दोस 5 मंत्रस? वी लुक एट हर्स्ट टाइम साइकिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र। वी लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एफएलडी फॉर प्राइस प्रोजेक्शन यूजिंग टाइम। ट्रेंड लाइन क्रिएशन, एफएलडी और ट्रेंड लाइन क्रिएशन एक मंत्र में आ गया। वी लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ केएसटी विथ प्रिंग स्पेशल, केएसटी विथ प्रिंग स्पेशल के, ये एक मंत्र हो गया जो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। वी लुक एट गैन स्क्वायर ऑफ 9 वेरी वेरी क्लियरली। गैन स्क्वायर ऑफ 9 के बेसिस पे, स्टॉक्स पे, चार्ट पे, डीएलएफ, एसबीआई, इन्फोसिस, all of those stocks will apply the Gann square of 9. I'll give you an Excel sheet also for that. We are going to look at that very clearly. And then the most important thing that we are going to do is combining this with centered Bollinger Bands method. So क्या क्या देखेंगे? centered Bollinger Bands, FLD, KST with Spring Special के, हर्स्ट टाइम साइकिल और गेन स्क्वायर ऑफ 9। ये सबको एक क्लब करके एक मेथड बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, जिसके बेसिस पे जैसे मैं टाइम प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप खुद भी टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हो और खुद भी ऑप्शंस में, स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो यू विल बी एबल टू डू दैट very very clearly. Sachin is saying sir, looking forward for tomorrow, waiting since 2 months for the day. क्या बात है, awesome. तो आपको फ्रेश रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है सुबह के लिए। और साथ ही में, आर देयर एनी पीपल हु हैव मिस्ड आउट रजिस्टरिंग फॉर द इवेंट बाय एनी चांस? आर देयर पीपल एंड प्रोड्यूसर साहब, क्या हमारे पास में एक दो सीट है कि जो लोगों ने मिस कर दिया है, हम उन्हें ऑनबोर्ड कर पाएंगे कि नहीं? प्लीज चेक कर लीजिए। वी कीप इट वेरी लिमिटेड because I want to ensure to answer every single question that you people are asking. The webinar is going to be in English and Hindi both. It's a mix. Recordings भी दी जाएगी आपको इसकी 1 महीने के लिए. Do not worry about it. You will get the recordings for a period of 1 month also. And इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इस 2 दिन के ट्रेनिंग के बाद में there will be a follow-up session which you will be a part of, and you will be able to ट्रेड यूजिंग टाइम साइकिल। यू विल बी एबल टू फोरकास्ट यूजिंग टाइम कि कभी मार्केट रिवर्स हो सकता है। यू विल बी एबल टू कंबाइन दिस कॉन्सेप्ट विथ एवरी सिंगल प्राइस एक्शन टेक्निक दैट यू आर यूजिंग ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड वो क्या प्रिपरेशन है, मैंने तो बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है आप लोगों को, किस तरीके से सिखाना है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें सोच मेरे दिमाग में चलती रहती है। कोई भी इस ट्रेनिंग के पहले I ensure that I am very much prepared कि आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे? वैसा नहीं है एज अ ट्रेडर, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं वो चीज ट्रेड कर रहा हूँ। सो इफ आई एम एनीवेज ट्रेडिंग दीज थिंग्स एंड सो आई एम एनीवेज यूजिंग दैट, सो आई डोंट रियली हैव टू really think of ki what is the question that you are going to ask, but that is going to be, so I'm going to share across how I am trading as a trader, what I am seeing and how is it helping me to create that portfolio. So that's what all the things that I'm going to do. So if there are people who are still left out and having that fear of missing out, the final call is here. I think we have 1 or 2 more seats left, so you can be a part of that and you can just simply register. The link will be shared by my colleague. ओके, सो ये कहना चाहता था दोस्तों। और साथ ही में सभी लोग ऐप डाउनलोड करना ना भूलना, बिकॉज बहुत सारा डिस्कशन टाइम के ऊपर
ऐप के ऊपर होने वाला है। तो ऐप के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, तो डाउनलोड करिए और हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें ये 2 दिन में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए, बट आप सीखने के लिए इंश्योर करना आज जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश माइंड से आना है, थोड़ा सा मेडिटेट करके आना है, जिससे जब आप सीखोगे तो जो चीज ग्रहण कर रहे हो, द थिंग दैट यू आर टेकिंग इन इज गोइंग टू बिकम very very fast and easy. That's how it's going to happen. App is for mobile itself, so you need to use the app on the mobile only. ऐप का मतलब ही मोबाइल पे से आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आशीष क्याल के नाम से मिल जाएगा आपको, यू कैन डू इट फ्रॉम दैट। how much time it will take, because I'm currently pursuing final year, 2 दिन का ट्रेनिंग है, this is a 2 days program, Jiva, which you can be a part of, and you will be getting a clear understanding of how to trade using time cycle, how to go about it. You will be understanding it very very clearly. Okay, awesome guys. So any questions for the participants of tomorrow and day after? I'm just checking if you have questions, else आज के लिए इतना ही था। एंड वॉल्यूम प्रोफाइल सपोर्ट 21,140 था, 21,120 के आसपास का है, 22,140। आई एम सो सॉरी भवानी राम, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। 22,140 लिखना था, 21,140 लिख दिया, वो तो बहुत दूर है। तो thanks for pointing that out. You are awesome, and it shows that you are getting the concept very very clearly. ऐप का लिंक शेयर कर दिया है चैट पे, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया ओम प्रकाश आप कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे आशीष क्याल को सर्च करना तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड लिंक विल बी शेयर्ड विथ यू ऑल ऑन व्हाट्सएप। आप सभी को कल और परसों की लिंक जिन्होंने एनरोल किया इस प्रोग्राम के लिए मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। झूठ जाना 10-15 मिनट पहले, जिससे तकलीफ ना हो बाद में कोई कुछ भी इशू होगा तो माय टीम विल बी देयर टू रिजॉल्व इट। प्लीज नंबर शेयर कर दीजिए so that everyone can call and check in case there is any kind of a challenge. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही। फ्राइडे एट 4 की समाप्ति करते हैं। मार्केट का व्यू बुलिश है फिलहाल के लिए। आई कैन चेंज माई स्टैंड विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई, just in case if Nifty changes the level, it breaches below 22,120, I will be changing my stand if the close is below prior day's low without an outside candle, and we'll combine this along with the simple concepts of time, और सारी डिटेल में डिस्कशन कल और परसों करें। Thank you very much. Have a wonderful time and become a wonderful trader.